मंजूरी मिली है। और इस बीच सीधे आपको सदन की कार्रवाई में लिए चलते हैं। सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सदस्यगण, बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखे हैं। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel
our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, Developing Agri-Districts Program. Motivated by the success of the Aspirational District Program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oil Seed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad, and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation
of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana Board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana Board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people, and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products,
These MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship, and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship
and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment, and grid-scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate
and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced
in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 ports, airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land
in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who are paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, SWAMI Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks, and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development, and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey,
documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up.
To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped central KYC registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be
4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure the availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components.
In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement.
I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, Vaanoki vaazhum ulagallam, mannavan kol noki vaazhum kudi. Meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized.
I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030.
In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates.
A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax. That is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 3, श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो बजट में बहुत सारी घोषणाएं, और लेकिन सबसे बड़ी घोषणा जो हुई है वो टैक्स पेयर्स के लिए, जो नौकरी पेशा लोग हैं जिनकी उम्मीद थी, और 10 लाख नहीं 12 लाख तक की आमदनी अब टैक्स फ्री हो गई है। और इसके अलावा जो कई सारे सामान हैं वो सस्ते हो गए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी, कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी, एलईडी एलसीडी टीवी के दाम घटेंगे, सीनियर सिटीजन के लिए भी टैक्स में छूट का ऐलान किया गया है। टैक्स रिफॉर्म में मिडिल क्लास पर फोकस और किराए की सालाना टीडीएस लिमिट भी, टैक्स रिटर्न फाइलिंग लिमिट भी बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। तो इलेक्ट्रिक उपकरण सस्ते होंगे, कस्टम से 7 प्रकार के टैरिफ हटाए जाएंगे। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए सीधे सीधे मिडिल क्लास पर फोकस किया, और मिडिल क्लास के लिए जो बड़ी घोषणा का इंतजार मिडिल क्लास के लोग कर रहे थे, नौकरी पेशा लोग कर रहे थे, उनके लिए ये बड़ा ऐलान, और जिसमें सबसे बड़ा ऐलान यही है कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब टैक्स पेयर्स को बड़ी छूट दे दी गई। 12 लाख रुपए की आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। और जुलाई 2024 के बजट में जो विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। यानी कि ये जो टीडीएस के भुगतान में अगर किसी को देरी हुई है किसी की, तो उसे भी एक राहत, तो ये भी मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत। और साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें भी बड़ी राहत। 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, सीनियर सिटीजन के लिए भी टैक्स में छूट दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका जो इंतजार है वो खत्म हुआ, और अब 12 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं, 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, सीनियर सिटीजन के लिए भी टैक्स में छूट दी गई है। तो कई सारे ऐलान, कई बड़े ऐलान, और इसमें सबसे बड़ा ऐलान तो यही है कि 12 लाख, या फिर हम यूं कहें कि नई रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम चुनने में अब फायदा होगा। ओल्ड टैक्स रिजिम चुनने में अब फायदा नहीं होगा। न्यू टैक्स रिजिम अगर आप चुनते हैं तो 12,75,000 तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं होंगे।
ये इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। सालाना 12,75,000 रुपए आपकी सैलरी है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न आप एक साथ फाइल कर सकेंगे। अगर आपने फाइल नहीं किया है तो ये भी एक छूट दी गई है। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। और इसके अलावा जो सस्ता महंगा की बात करें तो बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया गया और अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे और अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा। बिहार के लिए कई बड़े ऐलान। मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा क्योंकि बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस लिहाज से बिहार के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। मखाना किसानों को प्रोत्साहन देंगे। मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का भी ऐलान किया है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। प्रदेश में निकाय चुनावों की बारी, नेताओं ने शुरू की तैयारी। जनता भी बेकरार, चुनावों का इंतजार। कितने वादे हुए पूरे, कितने रह गए अधूरे। फिर वादों की भरमार, दावों की लगी है बौछार। इस बार किसकी है लहर? अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। प्रदेश में निकाय चुनावों की बारी, नेताओं ने शुरू की तैयारी। जनता भी बेकरार, चुनावों का इंतजार। कितने वादे हुए पूरे, कितने रह गए अधूरे। फिर वादों की भरमार, दावों की लगी है बौछार। इस बार किसकी है लहर? किसका होगा शहर? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर वार्ड का हाल। शहर की सरकार रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। इसको यहाँ लगाना, ठीक यहीं पे। मेरा यो घर बनन लाग रहा है सूर्य घर। जब सूर्य ऊर्जा के फायदे मिलेंगे नॉन स्टॉप, तब अपना मंथली बजट भी रहेगा टॉप। आप ही सोचो। देख भाई, ठीक यहीं पे लगाना है, समझे? अब मेरे गांव में भी लग रही है स्ट्रीट लाइटें। जब रोशनी रहेगी नॉन स्टॉप तो अपना गांव भी चमकेगा टॉप, है कि नहीं? ये होता है जब डबल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार से काम पे लगती है। कहीं फ्यूचर के रास्ते खुल जाते हैं तो कहीं दूरियां घट जाती हैं। हरियाणा सरकार के 100 दिन नॉन स्टॉप काम, टॉप परिणाम।
अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। प्रदेश में निकाय चुनावों की बारी, नेताओं ने शुरू की तैयारी। जनता भी बेकरार, चुनावों का इंतजार। कितने वादे हुए पूरे, कितने रह गए अधूरे। फिर वादों की भरमार, दावों की लगी है बौछार। इस बार किसकी है लहर, किसका होगा शहर। ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर वार्ड का हाल। शहर की सरकार रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। प्रदेश में निकाय चुनावों की बारी, नेताओं ने शुरू की तैयारी। जनता भी बेकरार, चुनावों का इंतजार। कितने वादे हुए पूरे। इसको यहाँ लगाना, ठीक यहीं पे। मेरा यो घर बनन लाग रहा है सूर्य घर। जब सूर्य ऊर्जा के फायदे मिलेंगे नॉन स्टॉप, तब अपना मंथली बजट भी रहेगा तो आप ही सोचो। देख भाई, ठीक यहीं पे लगाना है, समझे। अब मेरे गांव में भी लग रही है स्ट्रीट लाइटें। जब रोशनी रहेगी नॉन स्टॉप तो अपना गांव भी चमकेगा टॉप, है कि नहीं। ये होता है जब डबल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार से काम पे लगती है। कहीं फ्यूचर के रास्ते खुल जाते हैं तो कहीं दूरियां घट जाती हैं। हरियाणा सरकार के 100 दिन नॉन स्टॉप काम, टॉप परिणाम। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और इस बजट में
सबसे बड़ी घोषणा और सबसे बड़ी राहत मिडिल क्लास के लिए है। मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत, 12 लाख की कमाई तक कोई टैक्स नहीं। सीनियर सिटीजन के लिए भी टैक्स में छूट दी गई है। टैक्स रिफॉर्म में मिडिल क्लास पर फोकस किया गया है और वहीं किराए की जो सालाना टीडीएस लिमिट है उसे 6 लाख तक बढ़ा दिया गया है। टैक्स रिटर्न फाइलिंग लिमिट भी 4 साल बढ़ाकर कर दी गई है। तो मिडिल क्लास पर देखिए कितना फोकस किया गया है, ये आप समझ सकते हैं। मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग ये उम्मीद कर रहा था और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत। अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ, यानी लिमिट अब ये 12,75,000 हो जाती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर 75,000 को हम जोड़ें तो यानी अब जो न्यू टैक्स रेजिम में, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं तो ये बड़ी राहत होगी। 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, यानी अब टैक्स स्लैब जो होगा, नया टैक्स स्लैब, उसके मुताबिक 0 से 4 लाख तक कमाई पर शून्य टैक्स, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स, 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स, 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स और 24 लाख के ऊपर 30% टैक्स। ये नया टैक्स स्लैब है। तो नए रिजीम में शामिल टैक्स पेयर्स को ये बड़ा फायदा। और अब सरकार की भी कोशिश है कि न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादातर लोग आए। तो अब बहुत हद तक सभी लोग अब न्यू टैक्स रिजीम में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि यहां पर फायदा ही फायदा है। 4 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20% और 24 लाख के ऊपर 30% टैक्स। यानी सीधे सीधे आसान भाषा में समझें तो 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। और स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर 75,000 जोड़ देते हैं तो 12,75,000 की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल कर दी गई है। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई। 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर आप भर सकेंगे। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए की गई। और मध्यम वर्ग के लिए घोषणाएं और भी हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ घोषणाएं की, सुनते हैं। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience, a comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oil Seed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure
these three pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board, the people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. Access to credit. The credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, Deshamante matti kadoy, Deshamante manushuloy, meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. However, तो बजट में कई सारी घोषणाएं और उन घोषणाओं के जरिए मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश, किसानों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। लेकिन फोकस जो रहा इस बार का बजट वो मिडिल क्लास पर ज़्यादा रहा। मिडिल क्लास में नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत, 12 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं, न्यू टैक्स रिजिम के तहत कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया गया है और बजट में फोकस बिहार पर भी दिखा। अगर अलग अलग वर्गों की बात करें तो मध्यम वर्ग के लिए क्या है, सबसे पहले बता दें, 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, नौकरी पेशा के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12,75,000 हो जाती है। यानी इसे टैक्स स्लैब के जरिए समझिए तो 4 लाख तक की आमदनी पर शून्य टैक्स, 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स, 80,000 का यहाँ फायदा होगा, यानी कि आप शून्य टैक्स देना पड़ेगा 10 लाख तक, 12 लाख तक।
12 से 16 लाख तक 15% टैक्स, इसमें 70,000 का फायदा होगा। 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स और 24 लाख के ऊपर 30% टैक्स। 25 लाख तक फायदा जो होगा 1,10,000 का फायदा होगा। तो नए रिजीम में शामिल टैक्स पेयर्स को बड़ा फायदा होगा। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल कर दी गई है। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई। वहीं 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भी भर सकेंगे। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए की गई। मोबाइल फोन अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो मोबाइल फोन अब सस्ते होंगे। ई कार सस्ती होंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो सस्ती होंगी क्योंकि ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। एलईडी एलसीडी टीवी भी अब सस्ती होगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% कर दी गई है। और यह भी ऐलान किया गया है कि देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। वहीं हर घर नल से जल पहुंचाने का जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। ये मध्यम वर्ग के लिए ये सारे ऐलान। वहीं किसानों की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। केसीसी की लिमिट अब 5 लाख हो गई है, जो अब तक 3 लाख थी। तो ये किसानों के लिए भी ये बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान। देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को फायदा होगा। वहीं डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% कर दी गई है। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। वहीं बिहार में भी किसानों के लिए बड़ा ऐलान। मखाना बोर्ड का गठन किया गया जाएगा, जिसके जरिए मखाना बनाने वाले किसानों, मखाना का उत्पादन करने वाले किसानों को एक साथ जोड़ा जाएगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन शुरू किया जाएगा। मसूर दाल, तुअर दाल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना। तो ये किसानों के लिए और युवाओं के लिए भी बहुत कुछ है। युवाओं के लिए खासतौर पर स्टार्टअप पर जोर दिया गया है। युवाओं के लिए स्टार्टअप की बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। देश में 23 आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे और सभी सरकारी और माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। तो अब आप आसान भाषा में समझिए कि आपके लिए क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। कपड़ा सस्ता होगा, मोबाइल बैटरी सस्ती होंगी, कई दवाइयां, खासतौर पर जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं वो सस्ती हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक कार अगर आप खरीदते हैं तो वो सस्ती हो जाएगी। लेकिन महंगा क्या होगा? बड़ा टीवी, सिगरेट, विदेशी सामान या फिर महंगी कार, लग्जरी कार महंगी होंगी। इलेक्ट्रिक कार अगर आप खरीदते हैं तो सस्ती होगी, लेकिन अगर कार खरीदते हैं, और आज से तो मारुति ने अपने कार के दाम बढ़ा भी दिए हैं, होंडा ने भी अपने कार के दाम बढ़ा दिए हैं। तो ये सस्ता और महंगा आज के बजट के बाद से ये स्पष्ट हो गया है कि कपड़ा, मोबाइल बैटरी, दवाइयाँ, इलेक्ट्रिक कार या फिर मोबाइल फ़ोन भी, अगर मोबाइल फ़ोन भी सस्ते होंगे और ये मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। लेकिन महंगा क्या होगा? बड़ा टीवी। ज़ाहिर है मध्यम वर्ग के लोग बड़ा टीवी यूज़ अमूमन नहीं करते हैं। विदेशी सामान हैं, कार, सिगरेट, ये सब महंगे होंगे। और जगदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं झज्जर से संवाददाता। जगदीप, बजट पेश हो चुका है, मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी गई है। बहुत सारे ऐलान मिडिल क्लास के लोगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हरियाणा में किस तरह की प्रतिक्रिया, झज्जर में कैसे लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, लोगों का कहना है कि फिलहाल जो बजट पेश किया है इसमें काफी राहत भरी चीजें सामने आई है। चाहे वो
स्कूलों की बात हो, ITI की बात हो, या जो एक राहत मिली है कि 12 लाख तक की जो इनकम रहेगी उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, तो लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। बाकी हम जब लोगों से बात करेंगे तो काफी सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी, बजट से कितना खुश हो और कितना ना खुश। जी, क्या उम्मीद थी हरियाणा के लोगों को, क्या उम्मीद थी इस बार और क्या वो उम्मीद पूरी हुई? जी बिल्कुल। देखिए, लोगों को उम्मीद थी कि काफी सारी हमें अब की बार सुविधाएं मिलने वाली हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि 12 लाख तक की इनकम फ्री हो गई, स्कूल और कॉलेजों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और ITI वगैरह है, स्कूल है, इनमें बढ़ावा दिया जाएगा। कितना अच्छे से क्या क्या कर सकते हैं वो सब चीजें बजट में रखी गई है। तो काफी लोगों को ये उम्मीदें थी कि शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, कि इनको लेके बजट अच्छा होगा, और लोगों की उम्मीद कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही है जिस प्रकार का बजट अभी पेश हुआ है। किसानों के लिए भी, चूंकि हरियाणा में किसान भी बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, किसानों के लिए भी तोहफा, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है, अब 3 लाख से 5 लाख कर दी गई है। जी बिल्कुल। देखिए, सुबह ही हमने किसानों से जैसे बात की तो किसानों का कहना था कि खाद और जैसे बिजली समय पे नहीं मिल पाती, वो सब चीजें भी अगर इसमें है तो किसानों को और बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि खाद और दवाइयाँ किसान की कमर तोड़ देती हैं। फसलें जो है, खासकर सब्जियों की बात करें तो मंडियों में अच्छे दामों में नहीं बिक पाती। अगर ये चीजें भी अगर बजट में शामिल है तो किसान के लिए बड़ी खुशखबरी है। और क्रेडिट कार्ड की जो बात है, ये भी एक राहत भरी सांस है किसान के लिए, क्योंकि पहले 3 लाख रुपए की जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी वो बढ़ाकर 5 कर दी गई है। तो करीब करीब हम कह सकते हैं कि करीब दुगना ही हो गई है, यानी कि करीब 25-30% जो है वो और बढ़ गई है, 40% और बढ़ोतरी मिली है। तो इसको लेकर किसान काफी खुश है और किसानों को जरूर इसमें फायदा होने वाला है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जगदीप तमाम जानकारी के लिए। यकीनन हरियाणा में भी इस बजट को लेकर उत्साह, किसान में खुशी, और किसानों को जाहिर है किसान क्रेडिट कार्ड से जो 3 लाख तक अब तक उठाते थे, अब वो 5 लाख लिमिट बढ़ा दी गई है। छात्रों को क्या मिला ये भी आप समझिए, युवाओं को क्या मिला, युवाओं के लिए भी बहुत कुछ है। 500 करोड़ से 3 AI एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चूंकि AI का दौर है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 10,000 मेडिकल सीटें बढ़ेंगी। मेडिकल सीटें जो हैं वो बढ़ने से अब आने वाले दिनों में जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए आसान है। IIT में भी 6500 सीटें बढ़ेंगी। 23 IIT हैं जिसमें 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। और मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल की बात करें तो 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाने की बात कही गई है। वहीं PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। व्यापारियों की बात करें, व्यापारी वर्ग भी बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे। तो MSME जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, MSME को फोकस रखते हुए कई ऐलान किए गए हैं। MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होगी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो ये सरचार्ज भी अब नहीं लगेगा। 7 टैरिफ रेट हटेंगे, अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर Tier 2 शहरों में बनाए जाएंगे। तो अब शहर जो Tier 2 शहर है वहाँ पर भी फोकस किया गया है। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने के लिए राष्ट्रीय योजना बनेगी। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले साल 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, यानी किसान क्रेडिट कार्ड की तरह अब जो व्यापारी, छोटे व्यापारी हैं, सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। इसको यहाँ लगाना, ठीक यहीं पे। मेरा ये घर बनने लग रहा है सूर्य घर। जब सूर्य ऊर्जा के फायदे मिलेंगे नॉन स्टॉप, तब अपना मंथली बजट भी रहेगा। तो आप ही सोचो। देख भाई, ठीक यहीं पे लगाना है, समझे। अब मेरे गांव में भी लग रही है स्ट्रीट लाइटें। जब रोशनी रहेगी नॉन स्टॉप
तो अपना गांव भी चमकेगा टॉप, है कि नहीं? ये होता है जब डबल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार से काम पे लगती है। कहीं फ्यूचर के रास्ते खुल जाते हैं तो कहीं दूरियां घट जाती हैं। हरियाणा सरकार के 100 दिन नॉन स्टॉप काम, टॉप परिणाम। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। प्रदेश में निकाय चुनावों की बारी, नेताओं ने शुरू की तैयारी। जनता भी बेकरार, चुनावों का इंतजार। कितने वादे हुए पूरे, कितने रह गए अधूरे? फिर वादों की भरमार, दावों की लगी है बौछार। इस बार किसकी है लहर? मोदी सरकार 3.0 का पूर्ण बजट पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 8वीं बार पेश कर बनाया रिकॉर्ड। देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य। ₹12 लाख तक की कमाई पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि हम विकसित भारत के लिए बजट पेश कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर खास ख्याल रखने की बात की। वित्त मंत्री लोकसभा में आम बजट 2025 पेश करने के दौरान विपक्ष महाकुंभ हादसे को लेकर हंगामा करने लगा। विपक्ष ने बजट सत्र के बीच में ही वॉकआउट कर दिया। हालांकि विपक्ष वॉकआउट करने के दौरान फिर वापस भी सदन में लौट आया। बजट में स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ के अतिरिक्त बजट का ऐलान किया गया है।